In this video, I am giving information on an important spice, Hing or Asafoetida, which is used in food as a condiment and also used medicinally in the treatment of hysteria, nervous conditions, bronchitis, asthma, and whooping cough problems. In the modern herbalism, Hing is a strongly foetid brownish resinous latex, which comes from the perennial herbaceous plant Ferula, and several species of the Ferula occur in place to place. It is a native to the eastern Persia and western Afghanistan. I will give information on its botanical description and distribution and habitat and medicinal uses and benefits. Hing or Asafoetida is a perennial herbaceous monoecious plant of the family Apiaceae, means carrot family, and this plant grows up to the height of the 2 meters and leaves with a circular radii or 30 to 40 centimeter in size and very fine, and stem and leaves white sitting petioles. Sitting, the leaves consist of the three parts. The one is the main blade, another the seed, and in grasses also legules. But here is a sheath is important. It encircles the stems. That is called the sheath. And sheath is larger in size in this plant, Ferula, and especially the foetida, and flowers yellow 2.5 to 3 meter high stems bears, and 10 centimeter thick stem generally it possesses, and the stem is hollow and flowers yellow in color, and fruit the oval in shape and it is brown, and all parts of the plant smell very foetid, means unpleasant odor, and sometimes it is called in English the devil's and in Hindi Hing, and Sanskrit is Hingu, Kannada, and Sanskrit, and the word actually taken from the Asa, Asa, mystic for the word mystic, and Poetria means the smell, unpleasant smell, and in German it is also called Asafoetida, and the plant grows up to the height of the 2 meter and have a very long leaves 30 to 40 centimeter larger size, and its stem and roots, the extract exudes exudes a resinous latex exuded, and that is called the Asafoetida or Hing. This herb is used as a spice for the kitchen and best used as a digestive aid. In kitchen, this herb is used for the culinary properties, especially in curries and pickles, and it has a very strong pungent smells, and used in this plant used in the have a important, especially in the abdominal pain problems solving.
And there are two main varieties of the Hing which are available presently. Is the Lal Hing, means red Hing, and another is the Hing Kabuli, Safed, milky latex. And the Lal Hing means first variety is the red Hing is oil soluble, while the Safed or a Kabuli Hing is milky white and is soluble in water. Now distribution and its habitat. Asafoetida is native to the Iran, Pakistan, and Afghanistan, and this herb is exported to all parts of the world. In India, it is widely grown in Kashmir and northern part, some Himachal Pradesh, partly. Uh, the ancient was about the Ferula spida, the Hing Vat Kafanaha Sulaganam Pitokopana Kutupak Kotupaka Rasam Rucham Deepanam Pachanam Lahu. Bath Kaf means it states that the Hing is used to pacify Bath and Kapha. Ayurveda is three dosas, Bath, Kaf, and Pitta dos. It pacify Bath and Bath and Kapha, and but it increase the Pitta dosa and used to relieve the abdominal pain. And this pungent herb stimulates the digestive fire and used as a appetizer. And medicinally, it is used as a carminative, palatable, um, used in relief abdominal pain, and being rich in fiber, it helps in digestion and problems like the abdominal pain, flatulence, feeling gas uh, in the intestine, and gastritis problem is solved, and having anti-inflammatory, antimicrobial, and expectorant properties. It holds high significance in treating the respiratory problems like the asthma, bronchitis, whooping cough, and pneumonia. This pungent herb is uh, highly useful as a spice and as a medicinal plant to relieve especially the abdominal pain. हींग गाजर परिवार की एक 12 मासी जड़ी बूटियों फेरुला की कई प्रजाति, फेरुला इज द जीनस, मतलब इसका मीन जो है कुल जो जाति जो है इसकी फेरुला है, इसकी स्पीसीज दो हैं, एक तो है नॉर्थेक्स एंड दूसरी फोइटिडा। द बोथ स्पीसीज लुक आइडेंटिकल, दोनों एक जैसी दिखती हैं, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस होते हैं, बॉटनिकली इसको डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, ये किया जाता है। लेकिन ये जो फेरुला फोइटिडा बताया मैंने गाजर कुल का, यानी कि जानते हैं आप जिसमें धनिया गाजर जो पौधे होते हैं हर्बेसियस प्लांट, उसी में उसी कुल का ये जो है हींग है। और इसकी 12 मासी मतलब हर समय यह हरा होता है। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसमें जो इसका रेजिन होता है ये 5 साल बाद कलेक्ट किया जाता है पौधे पे। ये नहीं कि आपने इस साल इस समय आपने लगाया जैसे धनिया की तरह एकदम से उग गया और आपने सब्जी ले लिया, लेकिन इसमें जो है हिंग को जो है 5 साल के बाद ही इसको हार्वेस्ट करते हैं वगैरह, तो इसमें थोड़ा ये प्रॉब्लम है, इसीलिए इसकी कीमत भी इतनी महंगी है। इससे ज़्यादा आप जानते हैं कि हिंग कितना तोला के हिसाब से बिकता है, बहुत महंगा होता है। ये और फिर उसमें जो है उसमें तने और इसके जड़ से जो लेटेक्स निकलता है एक तरह से सेपी पदार्थ वगैरह, मिल्क लाइक समथिंग, तो उसको इकट्ठा किया जाता है, फिर उसको सुखाना पड़ता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इट इज़ बीइंग एडल्ट्रेटेड,
आजकल क्या होता है कि हींग में बहुत सारी मिलावट हो रही है, कोई आटा मिला देता है उसमें, अब बाजार में ऐसे उसको, बस हींग में तो खुशबू थोड़ा आती है, लेकिन उसके अंदर जो है कितना परसेंट वो शुद्ध है ये बहुत बताना मुश्किल है। तो उसकी शुद्धता अगर बहुत ही अच्छा हींग हो तो उतना ही उसमें उसका औषधीय गुण होता है, लेकिन अगर उसमें मिलावट होगी तो बहुत ही जो है उसका प्रभाव अच्छा नहीं होगा, दुष्प्रभाव हो सकता है। और ये रेजिनस जो गम है ये कलेक्ट किया जाता है, इसके मैंने बताया कि एक तना से किया जाता है, दूसरा जड़ से किया जाता है, और एटलीस्ट 5 ईयर्स के बाद यही इससे हम निकाल सकते हैं। और इसमें मेन कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, एक तो वोलेटाइल ऑयल होता है, मतलब उड़ने वाला तेल होता है, उसमें 10% करीब। दूसरा रेजिन होता है जो कि एक्सुड निकलता है बाहर से, जैसा आपने देखो ना पाइन ट्री से निकलता रहता है एक लिसर टाइप का रेजिन, इसी तरह से इसमें इसमें भी ऐसे लेटेक्स निकलता रहता है दूध जैसा, तने से और जड़ से। उसमें करीब 50% ये निकलता है प्लांट से। और इसी तरह से गम 25% होता है, फेरुलिक एसिड होता है। और ये जो वोलेटाइल ऑयल होता है इसमें, ये इट कंटेन्स टर्पीन्स, डाइसल्फाइड्स एंड पिनेन एंड मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द थेरेपेटिक एक्शन, यानी कि ये औषधीय गुणों वाला होता है, दवाई के काम आते हैं ये जो इसमें मिलते हैं आयल्स, वोलेटाइल्स आयल्स में। और इसका जो है मेन एक्शन जो होता है कहता है आयुर्वेद में कि इसका एक डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट है, मतलब डाइजेस्टिव पावर को बढ़ाता है ये। और दूसरा कार्मिनेटिव है, यानी पेट में हवा अगर भर जाए, जिसको फ्लैचुलेंस बोलते हैं, पेट में ज़्यादा भर रहा एकदम हवा भर गया बोलते हैं लोग, हमारे पेट में हवा भर गई भाई, तो उसके लिए बहुत ही अच्छी दवाई है ये एब्डोमिनल पेन के लिए। और दूसरा इसमें मैंने बताया कि मॉडर्न हर्बलिज्म में इसका यूज़ हो रहा है, जैसे क्या कहते हैं हिस्टीरिया एंड नर्वस कंडीशंस के, जैसे दिमाग के रोग जो होते हैं ना, कभी उसे दिमाग की तरह 3 तरह के रोग आप जानते हैं कि एक तो फिजिकली, दूसरा मेंटली, और तो मेंटली जो में प्रॉब्लम में आती है हिस्टीरिया वगैरह, तो उसको भी इससे लोगों ने काफ़ी मतलब उसके उपचार में उन्होंने उसका यूज़ किया है हिस्टीरिया में। और ये ब्रोंकाइटिस और अस्थमा में तो हाई, वुपिंग कफ के लिए भी ये यूज़ हो रहा है, और यहाँ तक कि वेस्टर्न मॉडर्न मेडिसिन में भी ये यूज़ किया जा रहा है। और ये पौधा जो है हमारे भारत में तो अभी सिर्फ कश्मीरी में ज़्यादा मिलता है और थोड़ा हिमाचल के पार्ट्स में, लेकिन ज़्यादातर ये एक्सपोर्ट वगैरह वहाँ से होता है, काबुल और ईरान से, और ये है और मध्य भारत से, सेंट्रल एशिया से होता है। थैंक यू जी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।